How much was number, like 7, 8? 10 jobs. 10 companies you have received basically 10 screening and interview call combined total. Correct. I received 2 calls, but those were not successful. Resumes, I had actually a list of 400 job applications. I had shared my resume. What I was doing is I was using ChatGPT, using the JD and what I saw online, how they are doing to include the keywords. And that's how I was doing. And then formatting it and making changes to ensure that what all have been mentioned is aligning with my JDs or with my roles and responsibilities. But the calls were not happening. So to crack an interview, you need to have a call. So call were not there. So my challenge was that. See, for me, when I lost my job on September, my main first response was to get into something. Ideally, I was looking for the next level before 2nd of September, as in director, associate director, VP, AVP. This is what I was looking for. With a standard resume, a master resume that I got created from Naukri. But that was not successful. After 2nd, I applied 400 applications. No calls were there. So while I was surfing on Insta, so I got to see that lady talking about it. Then I clicked on that. Then I got the video YouTube link for Major Reject. I watched that entire video, shared it with my with my family members, my brother and my mother, and we were talking about it. And for me, I knew this what he's saying is right, and I used to use the same kind of strategy of using LinkedIn. But earlier, approaching a recruiter through LinkedIn was much easier. 6 or 7 years back. But now it's like, as you know, everybody is reaching a recruiter, so you're lost in that particular conversations. So how to do that is something which I could see that let's try it. Earlier I thought, because there are so many when you start looking online, there's so many people who start approaching you, and everyone is not legitimate. I also had the same thought, because when money is involved, everybody is like, yeah, ye to jhol to nahi hoga. There was someone who approached me saying, you have to pay first month's salary, but we will give you a job. And this is something which I experienced 10 years back in one of the consultants at Faridabad, and said, no, this is a scam. You don't have to pay anywhere. This used to happen 20 years back. You have in industries, when you have wanted to look for a job, you have to pay first month's salary. That's how the consultant used to work. But once the corporate came into picture, recruiters are, as in consultants, get paid through the companies. Correct. So this is what was happening, and I was like, यार कब आएगा? यार call तो आए, and I was like, IM कर लिया, masters कर लिया, call क्यों नहीं आ रहा? क्या चक्कर क्या है? So this is what was happening. So I just went ahead with it. Then starting of the journey, when you came and my family was like, तू उनको पे कर रहे तो ये लोग क्या करके दे रहे हैं? मैं कहा ये मुझे गाइड कर रहे हैं. तो मैं बार बार ये चीज होता है ना, फैमिली जब इन्वॉल्व होती है तो दे कीप ऑन आस्किंग थिंग्स. सो मैं कहा रिज्यूम बनाना है. मैं कहा यार रिज्यूम कब बनेगा, कितने पेज का बनेगा? आई एम कनेक्टेड विद आई एम एलुमनाई व्हाट्सएप ग्रुप्स. सो आई शेयर्ड माय इनिशियल रिज्यूम. तो समबडी सेड ये 3 पेज का, इसको 1 पेज करो. मैं कहा 1 पेज कैसे हो सकता है यार? फ्रेशर थोड़ी ना 1 पेज का बनेगा. 1 पेज का तो फ्रेशर का बनेगा. ये 22 इयर्स का आप डाल ही नहीं सकते हो एक पेज में. आधे पेज में तो ऊपर का अता पता और नीचे समरी हो जाएगा. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ फॉर्मेट कैसे करूँ. फिर मैंने उसको तोड़ा. एक और AI का टूल था somewhere. I used that. I created as in columns and created that. फिर वो आया कि नहीं ये तो ATS compatible नहीं है. फिर मतलब I'm sharing my journey from the beginning of the year, जब मैंने उनसे ये कहा था. It's a mix of the things. So कहते नहीं ये नहीं, मैंने 2 पेज का बनाया. नहीं 2 पेज भी बहुत ज्यादा ऐड कर दिया. मैं कहा यार आप बताओगे नहीं तो रिक्रूटर तुम्हें लेगा क्यों? बताना भी तो जरूरी है. तो एक जने कहता है नहीं आप ना, देयर आर सम चैनल्स. सो कहता है आप उसको वो ले लो. मैं कहा देखो यार, जो
काम में तुम you people are, and I'm been frank in saying this thing when I am alumni group में यही डाला, मैं कहा लोग बोलने पे बहुत ज्यादा आते हैं, दिस इज अ ग्रुप वेर इन वी शुड कनेक्ट एंड हेल्प ईच अदर, वो ना करके तुम लोग ज्ञान बहुत ज्यादा दे रहे हो और जिसके पास जॉब नहीं है उससे पैसे खर्चे कैसे करवा सकते हैं, वो तुम्हारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने ये डाल दिया, लिख दिया लिटरली, एंड some people agreed with my steps। मैं कहा जब when you don't have a job you should not be spending, you should be wise in terms of spending and then look for a job rather than आप जाके यहाँ पे दे दो, उस स्पार्क करके है ना, दे सम कंपनी आउटस्पार्क करके देखना, आउटस्पार्क में। सो आई अप्रोच दैम, तो उन्होंने कॉल किया तो मैंने उनको बताया मैंने नौकरी से बना रखा था, कहते नहीं देन इट्स एटीएस कंपैटिबल। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जॉब क्यों नहीं आ रही, कॉल क्यों नहीं आ रहा। सो फिर मैंने जब आपसे लोगों से कनेक्ट किया देन आई स्टार्टेड, तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था बिकॉज लाइक माय फर्स्ट एप्लीकेशन दैट आई डिड, आई वाज़न्ट अवेयर कि कितना एटीएस कंपैटिबल चाहिए। सो इट वाज 75। मैं कह रहा था चलो मास्टर है रिज्यूमे भेज देता हूँ, इसमें होना चाहिए। शिखा करके जो लेडी है उससे मेरी बात चल रही है, कहते हैं अगर आपने भेजा है तो वो अपना रिक्रूटर देखेगा, कहते हैं नहीं यार टाइम निकल जाएगा, आप अप्लाई कर दो, मुझे कह रही है। मैं अप्लाई भी कर दिया, रिजेक्ट हो गया। मैं समझ नहीं पाया, मैं कहा यार ये हो क्यों रहा है ऐसा। फिर समझ में आया कि हर जॉब का वो कीवर्ड्स आता है लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा मेरे को भी चैलेंज है, कीवर्ड्स आता है, तो कीवर्ड्स को देख करके उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। फिर मैंने इनकॉर्पोरेट करने लगा तो सेंटेंसेस बड़े बन गए, फिर मैं छोटा कर रहा हूँ तो कई सारे चैलेंजेस आए। बट देन फिर मेरे को समझ में आ गया कि यूज कैसे करना है। जब मैंने आपसे भी कनेक्ट किया फिर मैं बनाया, उसको बनाने लगा। माय मोटिव वाज टू कनेक्ट विद पीपल, और कई जगहों पे मैंने कई लोगों को सुना भी दिया, झाड़ भी दिया। एक सीईओ को भी मैंने झाड़ दिया अच्छी तरीके से। मैं कह यार ये क्या बदतमीजी है, मगर तुम मुझे कॉल करने को कह रहे हो और खुद कह रहे हो नंबर दे रहे हो कॉल करो, और कॉल कर रहा हूँ तो तुम उठा नहीं रहे हो। मैं कहा यार टाइम तुम्हारा भी वैल्यूबल है, मेरा भी वैल्यूबल, सो लेट्स नॉट क्रिएट फस। कईयों को साफ, मतलब आई वाज वेरी कैंडिड इन द कॉन्वर्सेशंस। एक जन आया, एक्सेप्ट करता है बट कहता है कि आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। ये जन एक्सेप्ट करता है, कहता है बट आई विल नॉट बी एबल टू रेफर यू। मैं कहा फिर मैंने फर्स्ट सेंटेंस क्या है जब मैंने तुम्हें इनवाइट भेजा था, आई एम लुकिंग फॉर अ रेफरल, तुमने एक्सेप्ट क्यों किया। तो कहता है नहीं मैंने कनेक्शन, मैं कहा कनेक्शन बढ़ाने के लिए कहीं और जाओ, मैंने उसको हटा ही दिया। सी मेरे को व्हाट आई फाउंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज द कॉन्फिडेंस इन रिचिंग what he says। I knew it was there, but कई जगहों पे होता है ना कि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस ना करो तब तक आपको, आप 99 पे हो पर 100% आप जब खुद एक्सपीरियंस करते हो देन यू टर्न 100। सो आई वाज 99% श्योर होगा जरूर कुछ, होगा तो होगा, क्योंकि when he, the way he is presenting, the way he is talking, because I know what he is talking sensible, मुझे पता है ये होता है। बट एक होता है ना कि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस ना करो, सो दैट वाज द थिंग। सो विद टाइम व्हेन इट स्टार्टेड वर्किंग विद ऑफ माय ऑपरेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू रिमेंबर, जब मैंने उसके सीएफओ ने किसी को बोल भी दिया था, मैं कहा ये क्या तुम्हारा सीईओ बेवकूफ आदमी, पहले कहता है हाँ फिर कहता है ना। मैं कहा तो ये तो बात पलटने वाली चीज होगी। तो then I started getting that confidence, so but then at that time also I had that hesitation camera mein, when see you, when you do a normal conversation it's okay, but when you do in an interview you know somebody is judging you, so wo facial expressions, and you are not an actor to all of a sudden overcome that camera hesitation। I don't have a camera hesitation, but मेरे को realize हुआ जब मैं अपने आप को present कर रहा हूँ उन points पे, I am looking up, फिर ऐसा लगा ऊपर देख रहा है, मतलब ये तो I myself judge people, so ऊपर देख रहा मतलब ये सोच रहा है, इसका मतलब काम नहीं किया। So I used to have those kind of thoughts। फिर जब मैंने आपके साथ वो आइस ब्रेकिंग इंटरव्यू किया, that gave me that confidence। This is okay, so let's not look into the camera, let's keep on moving here and there, that makes more sense। ऑटोमेटिकली वो मेरा एक जो आइस एक हेजिटेशन था, it I was able to overcome that। So that's how it worked, and then things were smooth enough। जब बेका के जब बेका कर रहा हूँ टैमी के साथ इंटरव्यू में आपने वैसा आइस यू हेल्प मी आउट, एंड दैट वाज ओके। फिर things were like then one, एक कहते हैं ना कि एक जगह हो जाता है then it is like fast, that's how it was। So my experience from there was fruitful. yes। So that is something, an excellent way of actually writing things। क्योंकि see I have done everything, whatever I had written out there I had actually done, but remembering that and writing it, though the numbers may be here and there, जो मैंने 30% jump in the revenue लिखा है, it may be 10% or maybe 40% also,
So that is something. But thinking about every conversation, every company that I have worked with, that is something essential in terms of writing. So that is something which was really helpful. And when I was speaking with my brother, उसने एक sample resume बनाया था. I think he was on a call with somebody. तो मैंने उसको कहा कि नहीं, ये तेरे को पूरा टूल नहीं मिला. You have to do this way. जब तू ऐसा करेगा तब तेरे पास वो तू बना पाएगा उसको उस तरीके से. So I told him, so now he will work. अभी तो उसका कोर्स चल रहा है. So that's what it is. I think car working based on the car statements, writing everything based on it is essential. Uh, Something which I would recommend everyone has to work is when we get those missing keywords as in ATS Correct. words. So that is something. One is to create one, the one which we already have. The other should be a prompt to automatically incorporate into the existing one. Let's say I have a statement which is already there. I should have an option to select that statement, select that keyword, and insert in the right way. Because there is no point of unnecessarily creating 15 bullet points when the additional 6 or 7 bullet points can be accommodated in those 7 existing ones. So वो एक suggestion है next job के लिए in terms of doing. R360 was one, but then HR got laid. I Normal don't know. screening call, हाँ, total. Okay. HR screening call. It started with HR screening call. The HR said, I need some time. Then she had fallen sick. फिर वो New Year का आ गया, Christmas का ये सब शुरू हो गया. And then अभी भी वो pipeline में है. I know January में मेरे पास call आएगा. Then I would say no. Bangalore R360. Then there is Dynet Trace. I'm sorry, I need to look into the portal. So any of those jobs which are in that interview section, every one of them had Like actually how much was number? Like 7, 8, 10 jobs. 10 companies have, you have received basically 10 screening and interview call combined total. Correct. I had I had never done it, and because I have always got what I wanted, except for after IOG. So Mhm. before IOG, things were different. IOG is like they asked what was in the package. I said 30 to 40%. The person gave me 40%. Later on, I realized 40% is too less. They're much higher. So recruiters have always given that kind of thing, but that confidence in terms of telling or negotiating, saying इतने बीच में है, मैं आपको क्यों बताऊं, like you remember that recruiting agency जिसको मैंने सुनाया था, अरे that lady from that recruitment agency जिसने मुझसे सारा डिटेल ले लिया, and then जीशना ना कुछ था, Michael Page. Michael Page. So yeah, so she was like, and then she's stating that आपका resume, your resume was not ATS compatible. Then I'm sharing with her, कि, see, it is 98% compatible. I think there's some glitch in your or bug in your system which is telling you this thing. So and then it was already decided. So then me writing to her, then why are you asking? So HR के साथ, like for example, this company too, she was bound to tell me her range too because I was giving her a range. नहीं तो वो भी मुझे रेंज नहीं देती, नहीं तो फिर वो मुझे कहती नहीं इतना, अगर मैं उसका अमाउंट बोल देता तो इतना ही बोलती. तो मैंने उसको कहा था लाइक 20 to 25 के बीच में. एंड करंट कंपनी मैंने उसको इसलिए बता दिया बिकॉज आई एम वर्किंग, सो बिकॉज शी वांटेड टू सी वेयर एम आई इन दिस वन so that it can go up, because I don't want to take that risk. So she was okay with it, and I'm okay to start at a director level at the same manager wala salary पे. I'm okay with it. His reason is आप ज्यादा एक्सपेक्ट करके ज्यादा चले जाते हो ना नेक्स्ट लेवल के लिए, तो वो एक एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ जाती है. सो यू कीप योर थिंग्स स्टेबल, गेट योरसेल्फ सॉलिड इन दैट रोल, एंड देन नेक्स्ट ईयर तब मैं उनसे कह सकता हूँ कि अब आप जंप की बात करें. You have been amazing starting with. I'll be candid here. Starting में आप थोड़े से ये थे कि यार ये बंदा पता नहीं करेगा, मुझे लगा ऐसा कि थोड़ा सा मतलब आपके लिए भी एक इम्प्रेशन है कि मतलब बाकियों से भी कि लोग करते हैं, चलता है वैसा चीज है. पर आपने ये देखा कि ये बंदा वही है, ये छाते पे खड़े होके खड़े रहा. अब वो मुझे बहुत एक्चुअली ना इस प्रोग्राम का यूएसपी है ये. हम्म. अगर ये मेरे ही हाथ में है ना, तो मैं तो चाहूंगा कि मैं सबको प्लेस कर दूं और मैं आराम से बैठूं. मेरा क्लाइंट सक्सेस
200% होना चाहिए। करेक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे हाथ में नहीं है। हम्म। लाइक मैं रेज्यूमे तक ले जाऊंगा, मैं ये भी कर दूंगा, चलो जॉब भी कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, मैं कर दूंगा, हम्म। बट इंटरव्यू तो उसी को देना पड़ेगा उसी ना। को देना होगा, करेक्ट। तो चलो मैं मैं इंटरव्यू ये में भी कोई चीट निकाल दूंगा, डन, मैं कर हाँ, दूंगा, बट हाँ, ज्वाइनिंग तो उसी की होगी। उसी पे होगी, तो करना उसी को होगा। सो करना आई फाइंड यू टू बी वेरी हेल्पफुल एंड यू आर अ वेरी प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ योर अप्रोच इज कंसर्न। That and I mentioned that I cannot write more. मेरे को ज्यादा fancy मुझे नहीं पता, but I will only talk what is there. What I've experienced is you are very professional. You look into the small details, and you try to find how it can be modified. You help me, as I said, you help me in terms of breaking that ice when it comes to when I'm thinking और मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है यार वो मुझे जज करा वो मुझे जज करा तो उसको कैसे तोड़े. So you helped me out in that thing. So that was something amazing and I really appreciate that. As I said, मैं लोगों से जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करता. बहुत कम फ्रेंड्स हैं मेरे. uh, हम कहते हैं हर किसी को फ्रेंड है बट मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं वेर आई एम वेरी चूजी इन टर्म्स ऑफ किसको मैं अपना फ्रेंड बनाऊं और किससे बात करें किससे डिस्कस कर सकते हैं एंड यू आर वन ऑफ देम जहाँ पे मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आई कैन टॉक विद यू एंड सजेशन दैट्स व्हाट इट इज.